एवरीवन, आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 34। एलो कंपनी यूजिंग एग्जिबिट 1 only discuss in accordance with IFRS 8 operating segments whether the four divisions owned by LO company should be classified as operating segments. LO LO is the parent company of a group and multinational sports clothing and manufacture. The company is preparing its group financial statements for the year ended 31st of December 19. The following exhibit provides information relevant to the question. Operating segments outlines information about various divisional activity of the company for the year ended 31st of December 17. अभी आता है operating segments. Hello company's equity instruments are listed in the year ended 31st of December 17 and operated four divisions: tennis wear, badminton wear, squash racket, and casual wear. Casual wear operates overseas and produces sport clothing. It sells 90% of its products to other three divisions of Elo company. पहले ये क्या करना है हमको? ऑपरेटिंग सेगमेंट वेदर है कि नहीं पहले वो देखना है. With one only, one and two determine in accordance with IFRS whether the four divisions owned by Elo company should be identified as separate reportable segments, whether it is necessary or possible for any of the divisions to be combined into single reportable segment for Elo company. तो सबसे पहली बात तो ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है कि अपन पहले वो बता देंगे. अकॉर्डिंग टू IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ component of an entity is a component of an entity that may earn revenue or incur expense, that during the normal course of its business may incur revenue or incur expenses, whose whose financial performance, or whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker so that the funds can be allocated to the operating segments accordingly or appropriately, to which discrete financial information is available. These three are the points for operating segments. So, casual wear operates overseas tickets and 90% of its production to other three divisions of ELO company. ठीक है. Badminton wear and squash rackets sell the same clothing with different brand names. Okay. ELO company has stated that making a specific disclosure required by IFRS operating segment might affect its competitive position and be misleading. Therefore, the company has currently elected not to disclose any segment information. Company's chief operating decision, sorry, company's chief executive officer is the chief operating decision maker. Each division has a manager who reports directly to the CEO, and their compensation is partly based upon the division's results. Every quarter of the year, the CEO reviews the statement of profit or loss and the key performance measures such as earnings before interest, tax, depreciation, and amortization for each division. The division managers meet the CEO each quarter to review the division's performance and compare actual results to the budgeted figures. The final budgets of each division are based upon the performance and are approved by the CEO. So ये सबसे determine ये होता है कि all the divisions are operating segments currently. ठीक है. Different brand names. Casual wear operates overseas and produces clothing. ठीक है. Divisional performance. तो अभी अपने को देखना है. The table sets out the divisional performance of the for the year ended 31st of December 17. So now we have to see कि हर एक का 10% टेस्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So according to the 10% test, we have to verify each and everything. सबसे पहली बात तो हमारा जो कंबाइंड रेवेन्यू है दैट वी कैन से इज 31.4. इफ वी सी, एक बार लेना इसे टेबल बना देता हूँ सो दैट आपका कस्टम हो जाओ ना. एक्सेल ही खोल लेता हूँ मैं. यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट डू इट ऑन वर्ड. वर्ड पे एक बार चेक करके देखते हैं.
हो रहा है क्या विद दैट टेबल डिजाइनिंग का थिंग? इंसर्ट टेबल, भी कितने बनाने हैं पहले वो। ठीक है, फिर सबसे पहले तो मैं नाम लिखूंगा, फिर मैं टोटल रेवेन्यू लिखूंगा और टोटल रेवेन्यू के साथ कंपेयर करूंगा कि मेरा एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज। मैं सेम चीज प्रॉफिट के साथ भी करूंगा, फिर एसेट्स के साथ भी करूंगा। तो पाँच, पाँच आई थिंक चलेगा यार, पाँच इज मोर देन इनफ। मैं छः लिख देता हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी, जस्ट फॉर सेफ्टी। पर्टिकुलर्स रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस। रेवेन्यू के यहाँ पे लिख देता हूँ internal and external, internal and external प्रॉफिट और लॉस एसेट्स। ठीक है ना। टेनिस गियर, रेवेन्यू टोटल देख लेते हैं। इंटरनल इन तीनों में कुछ भी नहीं है, तो होता है 16, 1.6, 1.8 एंड 1.2 प्लस 10.8, 12। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। 2.3, 0.5, 3.6, 15, 3, 4 एंड 20। टोटल जो आती है वो आती है 20.6 प्लस 10.8, 31.4, 6.4 एंड 4.2, नहीं सॉरी 42। So now in order to in order to qualify as a reportable segment, a quantitative threshold test must be fulfilled, that is 10% test. In this 10% test, in this 10% test, the total revenue of the no, the revenue of the segment, the revenue of the operating segment should be 10% of the total revenue of of the combined operating segments, of the combined segments लिख देता हूँ खाली segments, internal और internal and external। ठीक है, ये भी लिख दिया। इसके बाद सेम चीज अपने को कॉपी पेस्ट करके लिखनी है यहाँ पे। ये हो गया मेरा पहली चीज, ठीक है ना। सेकंड चीज, दी एसेट, the assets of the operating segment should be 10% of the total assets
of the combined operating segments of the profit and loss. हाँ ठीक है, अभी 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 प्रॉफिट एंड लॉस का खाली सीन है। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है ना, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट शुड बी 10% or more of the absolute, in absolute, more in the absolute amount, in the absolute amount of the higher of all the combined profitable segment that did not the combined, एक मिनट ना, the combined the combined profitable operating segments that did not incur a loss, and and the combined loss making operating segment that did incur a loss। तो इन दोनों में से जो भी होगा, इन दोनों में से सबसे हायर, इन दोनों में से जो भी होगा उसमें का सबसे हायर अमाउंट सेलेक्ट करना है, एंड देन उनका 10% देखना है। सो इन दिस केस अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो अभी मैं इतना नहीं नहीं फिर से लिखने बैठता, लेकिन अब मैं सिर्फ मुंह से बोलता हूँ कि जो रेवेन्यू है भी उसका 10% होगा 3.14। सो वी शुड सी वेदर द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स have increase have more than 3.14 as their revenue, and then those operating segments will be considered as reportable segments. So in this case we can see that tennis gear and casual wear are the operating segments because their revenue exceeds 3.14 million। फिर अपन सेम चीज एसेट्स के लिए भी करेंगे, और यहाँ पर सेम चीज जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो वो 6.14 ही है, किसी भी सेगमेंट ने लॉस नहीं किया हुआ है। सो दैट्स ओके। सो यहाँ पर भी तो ये सब करने के बाद ना जो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन के आएंगे ना, तो ये होगा, एक तो ये होगा ऑपरेटिंग सेगमेंट, बिकॉज आई कैन सी नो कि देखो 0.64 होना चाहिए और यहाँ पे 4.2, 0.64 को बीट कर रहा है ये टू, और 0.42 को बीट कर रहा है ये एसेट्स, सॉरी 4.2 को बीट कर रहा है ये इसका टेनिस गियर का एसेट। उसके बाद ऑपरेटिंग सेगमेंट जो लास्ट होगा वो होगा कैजुअल वेयर, वो भी बीट कर रहा है, लेकिन बैडमिंटन वेयर और स्क्वॉश रैकेट दोनों ही बीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वो दोनों रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं है इन शॉर्ट। whether it is necessary or possible for any of the divisions to be combined into a single reportable segment। तो बेसिकली लोग एग्रीगेशन का पूछ रहे हैं। सो एज पर as per IFIS said, aggregation of operating segments is allowed, is allowed no, 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 no. Operating segments is allowed uh, when there is similarity seen between the product or service, similarity seen in the process of production, similarity seen in the class of customers, and similarity being seen in the distribution channels or the distribution methods। तो इन चारों में है तो फिर एग्रीगेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बोला है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का हम लोग लाइक कंबाइन करके बता सकते हैं कि नहीं। सो अ 75% टेस्ट could be fulfilled wherein wherein the previous reportable segments, if they exceed the 75% of the revenue of the external revenue that has been generated by the total external revenue, um, by the total external revenue of all the segments, then
then those particular reportable segments will only be reported separately. However, if they are not able to exceed the 75%, जैसे अगर यहाँ पे casual और tennis gear थे, if they are not able to exceed 75% of the external revenue, then uh, then additional operating segments can be taken into consideration and be said to be reportable segments. ऐसा ठीक है, एक बार अभी उनका आंसर हम लोग चेक करते हैं उनके वर्डिंग्स में कैसा है. ये रहा. ELO. ELO is a listed entity and therefore is required to comply with IFRS 8 operating segments. The company view that the disclosure of the segment information would be competitively harmful or misleading is difficult to understand as ISB writes accounting standards on the basis that they provide transparent, useful information to investors. ELO company should identify the information which would be useful to investors and how the information can be appropriately reported. Uh, segment figure 40. I don't think ये वाला point क्यों आया इसमें? I have no idea. Disclosure segment will be competitively harmful or misleading in segment information would be competitively harmful or misleading is difficult to understand as the ISB writes accounting on the basis of. नहीं, I don't think ये लिखने की जरूरत है. ये डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. IFRS 8 states that an operating segment is a component of an entity which engages in business activities from which may earn revenues. तो ये वो तीन चीजें थी जो मैंने बताई थी. ठीक है, ये तीनों. An operating segment includes components of an entity which sells primarily or exclusively to other operating segments. Information about components engaged in each stage of production is particularly important for understanding vertically integrated entities in certain businesses. For example, ELO company, therefore, casual wear can be an operating segment even though it sells 90% of its production to other division. मतलब भले ही क्या बोलते हैं कैजुअल वेयर 90% इंटरनली माल बेच रहा है बट फिर भी वो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट माना जाएगा. और पता है एक कोई तो ऑपरेटिंग सेगमेंट था जो बाहर डील कर रहा था ओवरसीज में, तो उसको भी अपन ऑपरेटिंग सेगमेंट मानेंगे बिकॉज वो ओवरसीज में डील कर रहा है, मतलब उसका ज्यादा वैल्यू है ऐसा. ELO company appears to have four operating segments: tennis gear, badminton wear, squash racket, and casual wear. This is because each segment engages in business activities which recognizes revenue, incurs expenses as a profit or loss account is prepared quarterly. As a CEO, ये तो अपन ने कॉपी पेस्ट करके बताया ही था. हाँ, ये वाली चीज has discrete financial information available for quarterly for each brand, including additional performance measures such as EBITDA. तो ये चीज हमने शायद फाइनेंस ये हमने डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया था. इट ओनली सेड दैट द CODM मतलब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इज इन्वॉल्व इन द रेगुलर असेसमेंट, ये हमने बोला था. और रेवेन्यू का हमने बोला था. आगे, each of the brand managers is directly accountable to meet quarterly with the CODM to discuss performance and compare the actual results to the budgeted figures. Since casual wear is an overseas entity, it is likely that separate disclosure is necessary so that users can better assess its performance and its significance to the group. मतलब casual wear को separately disclose करना है because of the fact कि वो एक overseas entity है, बस उतना ही. आगे, to determine if a segment is reportable, two main rules are employed. Firstly, 10% is considered. After determining the reportable segments under 10% rule, 75% test is applicable. मतलब जो मैंने बताया था कि जो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स 10% में पास आउट हुए हैं, अब वो सारे का 75% टेस्ट होगा विच इज एक्सटर्नल रेवेन्यू के ऊपर बेस्ड. So IFRS 8 requires an entity to report financial and descriptive information about its reportable segments. Reportable segments are operating segments or aggregation of the operating segments which meet any of the specified criteria. ये रहा. It's reported revenue from both external customers and inter-segment sales or transfers is 10% or more of the combined revenue, internal and external,
ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। तो जो मैंने आंसर लिखा था वही है। जिस दिन आंसर को और बड़ा करने के लिए ना हम लोग इसके रेवेन्यू में भी ये सेम चीज कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। द रेवेन्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट विच इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी 10%। तो इससे आंसर और बड़ा बन गया। एसेट्स का भी सेम है। द एट्स एसेट्स आर 10% ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ठीक है। उसके बाद ये चीज, द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट the combined reported profit of all operating segments which did not report a loss। मैंने क्या लिखा है? The profit or loss, the combined profitable operating segments that did not incur a loss। इधर है the combined reported profit of all operating segments that did not report। हाँ ठीक है, the combined reported profit। हाँ ठीक है, the combined reported profit of all operating, हाँ right, this makes sense। The combined reported loss, the combined reported profit of all operating segments that did not incur a loss, or a combined reported loss of all operating segments that did incur a loss। उसके बाद विच रिपोर्टेड लॉस, ठीक है। उसके बाद टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में बी एग्रीगेटेड इनटू सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ द एग्रीगेशन इज कंसिस्टेंट विद द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड। जस्ट द सेगमेंट है, ये देखो, सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर इन वेरियस प्रिस्क्राइब्ड रिस्पेक्ट्स। मतलब वही वो एग्रीगेशन के सारे पॉइंट्स इसमें हमने डाल दिए। फिर मैंने ये वो टेबल बनाया, टेबल बना के दे इन्होंने एक और खल नीचे नीचे टेबल बनाया 10% का, जो मैंने चीज वर्डिंग्स में बोली थी, इन्होंने उस चीज को भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, विच इज गुड। मीट द 10% थ्रेशोल्ड, तो ये 10% थ्रेशोल्ड जो मीट कर रहे हैं वो ये, हाँ, हमें भी सेम आए थे। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स लास्ट, फर्स्ट और लास्ट आया था। ये देखो इन्होंने यहाँ पे चालू किया, ऐसे ऐसे किया। इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 75% ऑफ द एंटिटीज रेवेन्यू, एडिशनल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मस्ट बी identified as reportable segments even if they do not meet the quantitative threshold set out above, until at least 75% of the entity's revenue is included in the reportable segments। Tennis gear and casual wear are separately reportable since they meet all three size criteria, although only need to meet one of the thresholds to be reportable। तो बैडमिंटन, अच्छा, इन तीनों में से, हाँ ये मैंने नहीं बताया कि इन तीन जो मैंने बताए थे, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड एसेट्स, इनमें से कोई भी एक चलेगा मीट करने के लिए। बैडमिंटन वेयर एंड स्क्वॉश रैकेट डू नॉट मीट एनी ऑफ द क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया एंड ऑन फेस ऑफ इट आर नॉट सेपरेबली रिपोर्टेबल। द एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ टेनिस गियर इज 77% of the total external revenue. So the 75% threshold is achieved by tennis gear alone only। एक्चुअली दो तीन, मतलब अभी ये जो टेनिस गियर और कैजुअल वेयर, इन्होंने दोनों ने रेवेन्यू बीट किया है ना। सो इन दोनों को ऐड करके फिर देखना है कि ये एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना जाता है। बट टेनिस गियर अकेले ने ही 77 पूरा कर दिया। इट्स ओके। हाउएवर बैडमिंटन गियर एंड स्क्वॉश रैकेट आर लाइकली टू शेयर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज दे सेल द सेम क्लोथिंग with different brand names। If aggregated, they would exceed the 10% threshold for revenue, profit, and net assets, and so could be reported as combined segment। In addition, IFRS 8 gives entities discretion to report information regarding segments which do not meet the size criteria। Entities can report on such segments if in the opinion of management, information about segment would be useful to the users of the financial statements। Then IFRS 8 gives entities discretion to report information regarding segments which do not meet a size criteria। Entities can report on such segments if the opinion information about segment would be useful to users। ठीक है, नो इश्यूज, हमने बेसिकली मेन तो सब कुछ बता दिया। दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो ये 9 मार्क्स के लिए सब ठीक है। डिस्कस हाउ द इन्वेस्टमेंट इन गैनिक कंपनी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईलो ग्रुप एंड डिस्कस वेदर गैनिक कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये रहा इन्वेस्टमेंट इन गैनिक। ऑन 1st of January 2017, ELO company has undertaken a venture with two other venturers called
द एंटिटी गैनिक कंपनी, कितने मार्क्स लिए? एक मिनट, ये सब 7 मार्क्स लिए, ओके ठीक है। गैनिक कंपनी विल मैन्युफैक्चर टेनिस एंड बैडमिंटन रैकेट्स एंड विल सप्लाई रैकेट्स टू tennis gear and badminton wear. Each venturer owns equity with one third of the voting rights, which also carries rights to the net assets. All key decisions which affect the venture are made by unanimous vote of the shareholders, as outlined in the agreement between the venturers. However, ELO company has the option to purchase additional 5% of Ganic company's equity shares from each of the other two venturers for a fixed price at any time. Ganic Company's financial results are scrutinized quarterly by the CEO of ELO Company and other venturers. ELO Company's CEO reviews the results to help make decisions about allocation of future resources and to determine whether to continue with the venture. हम्म। तो सबसे पहली बात तो अपन ऑपरेटिंग सेगमेंट में जो भी लिखा था ना वो सबको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद we will also write about IFRS 11 joint arrangements. That joint arrangements are uh, arrangements in which entities sharing control own a particular asset or liability, or joint arrangement में क्या होता है, jointly control over a particular asset, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। Just a second, I'll just take the wordings. Joint IFRS 11 joint arrangements are arrangements between two or more parties. Okay, are arrangements between two or more parties that basically have joint control. uh, the sharing of joint control is then being looked upon by the fact that whether the decisions regarding the regarding the activities require unanimous consent of all the parties. In the current scenario, we can see that each venturer that ELO company undertaken a venture with two other venturers for with two other venturers, इतना इसको कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। देन ईच वेंचरर ओन्स इक्विटी विद वन थर्ड ऑफ द वोटिंग राइट्स, ये सबको कॉपी पेस्ट करेंगे। यूनानिमस कंसेंट ऑफ बॉडी शेयरिंग शेयर होल्डर्स, एग्रीमेंट बाय द वेंचर्स, यहाँ तक इस सब चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट कर डालने के बाद वी वुड से कि joint arrangements takes two forms. One is joint operation and second is joint venture. A joint venture a joint venture is created when there is a separate vehicle involved. When there is separate vehicle involved, entity must be under joint control. Venture when there is contractually agreed. Joint ventures are joint arrangements which are structured through a separate vehicle. Joint ventures are joint arrangement which are structured through a separate vehicle, and joint operations are not. And as we can see that Ganic company is an entity itself and not a small asset or a process or operation. Thus, we can say that Ganic company accounts for as a joint venture. Thus, uh, the ELO group should account for Ganic company as a joint venture in accordance with IAS 28, investment in associates and joint ventures, uh, using the equity method, in which a single line recognition is being taken into consideration, which says investment in joint venture or associates, जो भी investment in associates slash joint venture in the SOFP, and in the and the consolidated statement of profit and loss, a share in the venturer's profit as a single line item is shown. तो ये अपन तो बता देंगे। अभी वेदर गैनिक कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो जो अपन ने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में ऊपर तीन चार पॉइंट वो लिखे थे रिकॉग्निशन के, उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। वो तीन जो थे सेगमेंट्स की, एट में ऑन रेवेन्यू और इनकर एक्सपेंसेस, वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, डालेंगे।
एंड यहाँ पे और लिखेंगे कि द फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर स्क्रूटनाइज्ड क्वार्टरली बाय सीईओ। देन इस पूरे पार्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देन वी विल से कि दैट इफ, हाँ भाई यहाँ पे रेवेन्यूज के बारे में बात नहीं की है ना। if revenues are being earned if revenues are being earned by organic company, then this can be classified as an operating segment, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक अपने जो बोला है वो सही बोला है कि IFRS 11 joint arrangement states that joint arrangement is an arrangement where two or more parties share control. Joint control exists when decision about the relevant activities requires unanimous consent of the parties sharing control. तो ये पार्ट अपने एकदम सही बोला था। उसके बाद इवन दो द कॉल ऑप्शन वुड गिव द एडिशनल 10% वोटिंग राइट्स टू इलो कंपनी, गैनिक्स गवर्नेंस स्टिल रिक्वायर्स द यूनानिमस वोट। देखो भले ही 10% का हमारे पास कॉल ऑप्शन है, लेकिन फिर भी गैनिक कंपनीज गवर्नेंस स्टिल रिक्वायर्स यूनानिमस कंसेंट और यूनानिमस वोट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स टू मेक की डिसीजंस as outlined in an arrangement between the venturers. Therefore, the investment would be under joint control regardless of the substance of the call option, which would change only the economic ownership percentage rather than the governance of control. मतलब भले ही 10% आ जाएगा, लेकिन वोटिंग पावर सेम रहेगी ऐसा। उसके बाद द joint venture is a joint arrangement whereby the parties who have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. This normally involves establishment of a separate entity. जो मैंने बोला था कि it is a completely different entity. That's why it is a joint venture. Therefore, ELO company should recognize its interest in Ganic company as a joint venture. In accordance with IAS 28, investment in associates and joint ventures, it should account for its investment in consolidated financial statements using equity method. अभी आगे operating segment. In this instance, the joint venture Ganic company should represent an operating segment as it engages in business activities from which it recognizes revenues and incurs expenses. The CODM regularly reviews the joint venture's operating results to allocate resources and assess performance. Also, discrete financial information is available for the venture. तो ये जो अपन ने पॉइंट्स बोले थे ना, ये इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे आगे। The joint venture can be considered an operating segment even though the investor only has joint control over the performance of the investee. The operating segment, the operating results should be regularly be reviewed by the CODM to contribute to decisions about the resources to allocated to the segment and assess its performance. Management may regularly review operating results and performance of the equity method investee for purpose of the evaluating whether to retain the relationship. However, management does not need to be responsible for making decisions about resources to be allocated or which affect its operations and performance. Therefore, control over the joint venture is not certain for it to be considered as an operating segment. Okay, so it is not, so it is uncertain whether it is an operating segment or not. Why? Because the management may regularly review the operating results and performance of an equity method investee for purposes of evaluating whether to retain the relationship. However, यहाँ से आंसर चालू होता है, मतलब वो टर्निंग पॉइंट ये है। However, management does not need to be responsible for making decisions about the resources to be allocated or which affect the operations and the performance. मतलब मैनेजमेंट शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई जैसे यहाँ पर भी यहाँ पे जो कुछ भी प्रॉफिट्स वगैरह हो रहे हैं, देखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड क्वार्टरली बाय द सीईओ ऑफ ईलो कंपनी, बराबर है, एंड अदर वेंचरर्स। ईलो कंपनी रिव्यूज द रिजल्ट्स टू हेल्प मेक डिसीजंस अबाउट द एलोकेशन ऑफ फ्यूचर रिसोर्सेज एंड डिटरमाइन वेदर टू कंटिन्यू विद द वेंचर। यहाँ पे हम सिर्फ हेल्प कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली ट्विस्ट द रिजल्ट्स और एनीथिंग। सो देयरफॉर दे हैव सेड कि they do not need to be responsible for making decisions about the resources to be allocated or which affect the operations and performance. इसके कारण there is a question mark on whether it is an operating segment or not. It is not या it is yes ऐसा भी नहीं है, but still there is a question mark ऐसा।
थर्ड पार्ट पे आते हैं। सेगमेंटल reporting provides information about an entity's operations which enable users of financial reports to assess and make informed decisions on the true position and performance of an entity with diverse segments. Explain why segmental information is important to investors. और इस चीज से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, मतलब ये एक्चुअली 9 मार्क्स के लिए आंसर है पूरा। इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? In recent years, investors do not prefer the traditional financial reporting methods, but would rather prefer a more advanced way of reporting their reporting an entity's financial performance, or assessing an entity's financial performance. Uh, which enable the user financial report assess and inform decisions on true position of the performance of an entity with diversified segments. ये लाइन को तो अपन वैसे वैसे कॉपी पेस्ट करके कहीं ना कहीं पर तो डाल देंगे। Recent years, segment information has gained importance because in recent years, segment reporting has gained importance because investors would prefer a detailed view of each and every segment of an entity, and would scrutinize the results uh, in uh, in tremendous detail. See, what happens is, there might be cases wherein one segment may be providing goods to the other segment, because of which the prior segment is not able to gain enough revenue, because of which the one segment would feel demotivated to work, and thus create a lot of problems in the entity's operations. Investors need to know about this in detail, so that they can find ways in order to, manage the intercompany operations. Actually, intercompany operations are managed by directors, so not actually by investors. uh, to understand how directors are viewing each and every segment of an entity, and whether the directors are focusing on each and every segment of an entity equally. uh, to understand what are the directors' view regarding the future of the entity. उसके बाद, if there are certain segments which are crucial in an industry, um, then it is important for the investors to understand the operations of that particular segment. This would also help the potential investors understand whether or not to invest their funds in an entity or not. If yes, then at what interest, or then if yes, then at what return rate. Um, और क्या बोल सकते हैं इस बारे में? Each segment plays a different role in the entity, and investors might be interested in understanding one particular role at a time. For example, one segment might be capable or would have the responsibility of collecting the assets or storing the assets of the entity, while other would be more involved in the production process. It depends upon the nature of the investors, whether they on which of the segments would they want to focus their attention on. अभी पढ़ते हैं इनका आंसर, देखते हैं इन्होंने कितना लिखा है और क्या लिखा है। According to conceptual framework, the objectivity of financial reporting is to provide information which is useful to the existing and potential investors when making the decisions about providing resources to the reporting segment. When making decisions about buying, selling, or holding equity instruments, investors require information about the amount, timing, and uncertainty of the future cash inflows to the reporting entity. Actually, अपन comparability के ऊपर नहीं बोला. We can also write about comparability here. Investors are interested in as much detail as possible on the discrete business sections of an entity, so that they can see the return on those segments relative to their investment. Exactly. So,
each return, नहीं, return that each segment can guarantee, or each return that the segment can produce. Entities which operate in many countries, for example, will be exposed to varying risk and growth rates. It may be that some areas of operation are in decline, and this will impact investors' assessment of future net cash flows. Segmental reporting therefore gives more insight into the organization's potential long-term performance. Segmental information, तो ये तो मैं बोला कि फ्यूचर को देखने के लिए segmental information is derived from the financial statements, but there is degree of subjectivity on how an entity may apply IFRS 8. The information can differ from that reported in the financial statements. Therefore, from an investor's point of view, the nature and amount of reconciliation to the financial statements are useful pieces of information. The usefulness of a reconciliation will depend on the extent and the magnitude of the changes to the financial statement amounts. The reconciliation can, however, be complex and difficult to understand. We can actually also write about the conceptual frameworks का two fundamental points, which are that relevance and faithful representation. उन दोनों के बारे में भी बोल सकते हैं यहाँ पे. Segmental information is more useful if based on the information used by the management when making decisions. तो यही कि मतलब how the investors can understand how the directors or how the management is looking at the future of the entity. ये वाला point. This allows the investors to see the business through the eyes of the management. The information d- disclosed should enable investors to evaluate the nature and financial effects of the business activity in which it engages, and the economic environments in which it operates. The use of management approach should have a positive effect on the quality of segment information from the perspective of usefulness and relevance. Companies with clear, comprehensive segmental disclosure notes have an opportunity to differentiate themselves from their competitors. Companies with clear, comprehensive segmental disclosure notes. Okay. तो जो लोग डिस्क्लोजर के साथ प्रोवाइड करते हैं या सेगमेंटेड डिस्क्लोजर्स के साथ प्रोवाइड करते हैं, दे ऑलवेज हैव एन अपर हैंड ओवर द इन्वेस्टर्स. ऐसा ही एक लास्ट पॉइंट इन्होंने कंक्लूड करने के लिए बोला है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.